morning, students. Jai Swami Narayan. I hope you all are fine. And students, today we are going to learn a new lesson from our GK book. Okay, and the name of the chapter is Let's Dress Up. Means in this chapter now we are going to learn how the people wear the traditional dress and where they are going to come by wearing that traditional dress. Okay, so in this now we are going to see that today there is a fancy dress party. मीन्स वहाँ पे क्या था, फैंसी ड्रेस पार्टी थी और इसीलिए ना जो दूसरी दुनिया के जो लोग वहाँ पे आए हुए थे वो सब अपने अपनी कंट्री के ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहन के वहाँ पे उस पार्टी को सबके साथ बनाने के लिए आने वाले हैं. ओके, सो टुडे देयर इज अ फैंसी ड्रेस पार्टी. People have come in traditional clothes of various countries. So one by one we are going to read. Okay, so first is of Toshiro and Suki are dressed in Japanese kimonos. यानी ये कौन से कंट्री के थे? तोशिरो और सुकी वो जापान कंट्री के थे, जापान के थे और उन्होंने ट्रेडिशनल जापानीज किमोनोस को पहना हुआ था. दे आर ऑल्सो वेयरिंग द ट्रेडिशनल फुटवेयर गीता विथ स्प्लिट टॉय शॉक्स. यानी उन्होंने किमोनोस के साथ साथ फुटवेयर भी पहना था, गीता विथ स्प्लिट टॉय और सॉक्स भी वो पहन के आए थे. कहाँ पे आए थे वो सब पहन के? वो फैंसी ड्रेस पार्टी में आए हुए थे. फिर सेकेंड, हु विच आर दे? मीन्स मी एंड लिलिंग आर वेयरिंग Cheonok Sam, the traditional Chinese dress for women. जो चाइनीज़ की जो वुमेंस होती है वो कौन सा ड्रेस पहनती है, उनके ट्रेडिशनल ड्रेस को क्या बोला जाता है? उसे चौनक सैम बोला जाता है. इट इज़ अ टाइट फिटिंग ड्रेस विथ अ हाई नेक एंड अ क्लोज्ड कॉलर. आरन दे लुक प्रिटी. मीन्स जो ड्रेस वो पहनते हैं वो कैसा होता है? एकदम टाइट होता है, टाइट फिटिंग ड्रेस होता है और उसमें जो हाई नेक होता है उनका वो भी एकदम क्लोज कॉलर्स से बना हुआ ड्रेस होता है उनका. ओके, एंड दे बिलोंग टू विच कंट्री? दे बिलोंग टू चाइना. Then next is of Scotland. Here now the James and Jenny are wearing the national dress of Scotland. Means this James and Jenny are wearing their national dress. Okay, and it is of which country? It is of Scotland. Okay, James is wearing a knee length kilt made of tartan. यानी वो किस चीज़ से बना हुआ ड्रेस पहना था उन्होंने? टार्टन से बना हुआ. अ वूवन क्लोथ विथ चेक्ड बैंड्स. एंड जेनी इज वेयरिंग अ स्कर्ट एंड अ शॉल मेड ऑफ tartan. मीन्स दैट गर्ल इज ऑल्सो वेयरिंग अ ड्रेस like skirt and shawl made of tartan. Both of them are wearing shoes called gills and brogues. Gilly brogues. Okay, then next, that is of Korea. We are going to see of Korea. Okay, so Jung and Wan are wearing a Korean dress hanbok. What is the name of the traditional dress of Korean people? It is called as hanbok dress. Okay, one hanbok is made of a long skirt called chima and a jacket called chogori. Jung hanbok includes loose fitting trouser called baji with a shirt and a jacket. Means this is a totally different kind of cloth which is wear by which country people? It is wore by Korean people, and it is called, which the dress is called as what? That is called as hanbok. Okay, then next we are going to see of Indian. Okay, the Leila
and Jahan are dressed in traditional Indian clothes. Means which is the traditional cloth of India? In Indiana, the women are wearing sari and the men are wearing what they wear? They wear kurta and dhoti. This is the traditional dress of India. Okay, so Laila and Jahan are dressed in traditional Indian clothes. Laila is wearing a sari and Jahan is wearing a kurta and a dhoti. Okay, then next is of Russia. Okay, Sasha is wearing a Russian sarafan. यानी जो साशा नाम की जो वुमन है उसने कौन सी कंट्री के कपड़े पहने हुए हैं? उसने रशियन कपड़े पहने हैं. ओके, एंड दे आर कॉल्ड एज साराफान. शी लव्स दिस लॉन्ग एम्ब्रॉयडरी ड्रेस. शी इज ऑल्सो वेयरिंग अ kokoshnik on her head and the Russian footwear वेलेंकी विच इज़ मेड ऑफ वुल. मीन्स उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जो रशिया के ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे कहा जाता है सराफान. एंड शी इज़ वेयरिंग द लॉन्ग एम्ब्रॉयडरी ड्रेस. शी इज़ ऑल्सो वेयरिंग द कोकोशनिक ऑन हर हेड. उस जो है सर पर पहना है ना उसे कहा जाता है कोकोशनिक. और उसने और क्या पहना है? उसने रशियन फुटवेयर वेलेनिकी भी पहना है विच इज़ मेड ऑफ वूल, जो वूल से बनता है. देन नेक्स्ट इज ऑफ सऊदी अरेबिया. द नेम ऑफ दिस कंट्री इज सऊदी अरेबिया. एंड यू नो व्हाट दे वेयर? हसीना इज वेयरिंग द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सऊदी अरेबिया कॉल्ड abaya. Abaya is a dress which is worn by women. Okay, and Hussein is wearing a twab, a long dress till the ankle. He is also wearing a kutra and eagle on his head. Means this kind of clothes are worn by which country people? They are worn by Saudi Arabian people. Okay, so after reading this, now we are going to give the quiz. Questions are asked in this and which we are going to give the answer. Here some headgears are given in the picture, so we have to see the picture and we have to give the answer. So first one is of which picture headgear? It is of turban. Okay, so first picture belongs to turban. Then second is hat. So each to which does this hat belongs? It belongs to felt hat. Okay, then next is third one is of face. The headgear is of face. And the third one is of sombrero. Okay, the fourth one is sombrero. It is a headgear. Okay, this all the four are headgears in the picture and we have find out the answer also. So read this and you also write in your test book. Okay students, so read and write in your test book. So bye and take care of yourself.